सेंटर में सेंटर लुक सेंटर आत्मा जी दर्शन दो ना। ठीक है थैंक यू सर। ये भाई लोग थोड़े थोड़े पीछे, मैं खड़ा था उधर, मैं सबको पीछे कर रहा हूँ। ऐसे है पीछे ऐसे बस सामने राइट में मैम बोल रहा है, राइट में हेलो रुकिए यहाँ पे तुषार भाई इधर, तुषार भाई साथ में थोड़ा इधर आ जाना पहले, कम क्लोज। अरे कितना, अरे हाँ सब हो जाएगा। मत रे सर सेंटर सर इकडे सेंटर तुषार सर इधर 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 यहाँ यहाँ क्या लुक सेंटर थैंक यू सर लुक या सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट सब इधर बस। इसको मालूम है मतलब क्या है? विशाल सर इधर, विशाल सर यहाँ। थैंक यू आत्मा जी दर्शन थैंक यू बस 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 थोड़ा इधर 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 सेंटर में, अरे सेंटर में आ जाओ मैम यहाँ पे थोड़ा सेंटर। मैम लुक हियर बस 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 लुक हियर मैम सेंटर में ना यहाँ पे मैम लुक हियर डिम्पल जी इधर इधर यहाँ पे सेंटर डिम्पल डिम्पल जो सेंटर आँख बंद लुक हियर कपी लुकिंग नाइस लेफ्ट में मैम इधर सेंटर यस आत्मा जी इधर बस रुको ना, थोड़ा रुक जाइए ऐसे। बैक टू फ्रंट अरे हीरो मत कब कभी प्लीज देखना मत बोलना। रुको ना मैम का बात सॉरी हाँ इधर देखो इधर आत्मा जी दर्शन आत्मा जी दर्शन दो आत्मा इसको तो रोज में हवेली पे आओ बाबा ओके ओके डन
May I please request Sangeet sir's family to join us? May I request his son, Shantanu Sangeet Sivan, his daughter, Sajna Sangeet Sivan, son-in-law Deepak. आगे बढ़ने से पहले I'd like to hand over the mic, the stage to Jay sir, Tushar sir and the rest of the cast. I think it is only fitting that आज की दोपहर हम शुरू करते हैं with a heartfelt tribute. Over to you, sir. You want me to start? Yes. Yeah. I'm very happy, very excited. मैं जयेश भाई को यही बोल रहा था अभी कि संगीत जी के साथ मैंने 2005 में काम किया था और हाँ मई के महीने में क्या कूले हम रिलीज़ हुई थी 2005 20 साल बाद आज संगीत जी के साथ दूसरी फिल्म आ रही है मेरी कप कपी जो एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है बहुत ही प्यार बहुत इमोशन के साथ और सबने बहुत मेहनत की है एंड टुडे इज़ वेरी बिग डे बिकॉज ट्रेलर लॉन्च हो रहा है इस फिल्म का. So I'm very excited to meet all my co-stars after so long and to have Sangeet ji's family here. That is the most emotional aspect for me today is that he's with us in spirit and he'd be very happy to witness what is happening today here because he was really looking forward to the release of this film. So we are all more than happy to be doing this today, not just for ourselves, not just for the audience, but for him. Coming here. We are so happy that you all join. संगीत जी की ये लास्ट फिल्म है और he put all his best for this film. All the cast have done great work and we are looking forward that all of you support us. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, ये एक बहुत ही खास मौका है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन जो ट्रेलर है उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं Do you think we should show them the trailer now? Yes. Yes. Right now. What do you say? Do you think it's time? Yes. Ready? Fantastic. May I request the cast? May I request sir? May I request his wonderful family to take a seat as we are now ready to show you the wonderful trailer. Cup Copy. Let's do this. Hello, Chick. Hello. हो so please tell us कुछ हुआ है during the shooting? एक चीज हुई थी हेलो चिक शुरू हो गया. जब भी हम कोशिश करते हैं इस बारे में बात करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है तो आपके साथ ही हो रहा है somehow. नहीं so we were shooting at किस हुआ मारता रहेगा माइक को तो कैसे चलेगा hello okay on a serious note 12 AM को we were shooting it was a night shoot and हम लोग रात को शूट कर रहे थे and ouija board का ही सीन था and वहाँ पर लाइट्स लगी थी तो अचानक से लाइट बंद चालू होने लग गई थी so we were like we thought that it is a part of the scene तो सीन रुक गया था पर हम मतलब दे हैड कट द शॉट बट हम लोग फिर भी खेल रहे थे उसमें बाद में हमको बोला कि नहीं शॉट कट हो चुका है आप लोग मत खेलो एंड देन दे हैड टू फिगर आउट कि ये क्यों हुआ एंड इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेटअप और द लाइट अप सो दैट हैपन बट बाद में पता चला वो लाइट दादा ने कुछ बटन पे पैर रख दिया था तो उसकी वजह से हो रहा था फिल्म में मेरे कैरेक्टर का पाँव टूट जाता है और जैसे मैंने फिल्म साइन की मैं गड्ढे में गिर गया और मेरा पाँव टूट गया था दिस इज़ रियल मतलब सो मुझे बहुत ज़्यादा मेथड एक्टिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ा इट वाज
and eyes also. So Yeah, you at got the- something in your eye, no? Yeah, तो मेरे आँख में बम पड़ा at the end of the shoot. So I was the one who was under like lot of trouble from signing to finish. So I kind of got an omen. So while we were shooting a scene, मेरे बालों में आग लग गई थी while shooting. And yeah, one of the ADs, Rajiv, was there and उसने आके पीछे से वो किया. So if you're wondering why my hair is short, that's why. I took the message. Yes. Any other incidents that you want to share with us? That I know that there must be a lot of incidents that have happened. Jay, sir, please. After completing movie, we kept one private screening in Future Studio. So the screening started, and there is a scene where जब exactly calling अनामिका, तो अनामिका वाला सीन जैसे ही आया, उनका प्रोजेक्टर का बल्ब उड़ गया. और they say कि in our history this is first time. Same thing happened. I kept a screening for Z in Sunny Sound. So with the same scene, exact when Anamika wala scene, I think it's after 25 minutes, and their sound is gone. Like visual was there, sound गया, and the guy who operating said कि 25 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा first experience है ऐसा, कि जब ऐसा हुआ. And Girish ji is here. He was there for the screening. And also adding post to the shoot, Shreyas got an heart attack. We could have avoided that. Thank you so much, ladies and gentlemen. Okay, Tushar sir, do you want to share anything about it? Well, मेरे oh God, ये माइक मुझे पंच किया अभी तात में. हाँ. कुछ तो मेरे शूट पर आने के पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे. मुझसे कहा गया था कि ये बीमार हो गया था, वो बीमार हो गया था, श्रेयस भी बीमार हो गया था. तो मैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ गया. स्टीम इनहेलर लेके गया, मास्क लेके गया, विंटर थी तो जैकेट लेके गया. तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन फिलहाल आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ. ओके? Oh, अच्छा, I think this is. देखो देखो देखो. तब से ये नहीं हुआ है यहाँ. So I don't know what's going on. Hello जी. अच्छा, we have questions from the media as well. Yes, sir, please. सर मेरा सवाल तुषार जी से है. सर व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट? सर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ अजीब लगा इसमें पढ़ के स्क्रिप्ट को? कुछ पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी मैंने स्टोरी संगीत जी से. सो सुनकर बहुत अच्छा लगा. और मतलब कि मैं इतना सोच नहीं रहा था. आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क विद संगीत जी अगेन दैट मैंने उसी वक्त उनसे मतलब एक्साइटेडली बोल दिया कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. बट हॉरर फिल्म तो मेरी फेवरेट जॉनर है. या मैंने इतनी हॉरर कॉमेडीज़ की है, और शुरुआती दौर में भी कुछ तो की थी जो एक स्लैशर हॉरर थी. सो इट्स माई फेवरेट जॉनर. मेरे फैमिली का फेवरेट जॉनर. माई सिस्टर एंड माइंड, वी बोथ आर बचपन के मतलब राम से भक्स वी आर. बट दिस इज़ डेफिनेटली very very contemporary and very slick and very well enacted by all of us including myself. So the opportunity was great. तो पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी. थैंक यू सर. भूल चूक माफ के बाद ये तो आपके अंदर ये रोल में आपका बनारसी फ्लेवर का रोल है? इसमें नहीं है, उसमें है. वो कहानी बनारस की है. दिस इज कप कपी. कप कपी में आपका ये रोल इसमें थोड़ा गुजराती डायलेक्ट है मेरा. अच्छा, हाँ, तो आप कुछ गुजराती में बोल दो ना. एक मेरा तकिया कलाम है इसमें, जो आपने शायद गाने में भी सुना होगा, टीजर में भी मैंने बोला है भाईला. तो हम गुजराती लोग किसी भी ऐसे मेल पर्सन को भाई बनाना चाहते तो हम ऐसे ही बोलते हैं. जैसे मैं गाने में इनको बोल रहा हूँ, ए अच्युत भाईला. सो ये मेरा एक तकिया कलाम मैंने कह सकते हैं रखा हुआ है. एंड थैंक्स टू हमारे राइटर जो है सौरभ सर, जिन्होंने मुझे ये बहुत बार यूज़ करने दिया, विच वॉज नॉट प्लान्ड. बट अबाउट टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस, आई एम रियली हैप्पी एंड आई थिंक सो आई शुड से आई एम ब्लेस्ड, because this is a miracle for me that 2 films were releasing in the same month. And bas I am just grateful to Jay sir, Sangeet sir and everyone who brought me on board in this project, and thankful to God who aligned everything on the same month. So yeah, Congratulations. thank you so much. So much. Fantastic. Yes, we have a question. Hello. First of all, आप सबको congratulations and all the best. Thank you.
एंड ये मूवी आपकी 100% हिट जाएगी. और मेरा क्वेश्चन तुषार सर से है, एंड आई एम योर बिगेस्ट फैन. जब आपने स्टार्ट किया था जब से लेके एंड तक, गोलमाल अगेन तक, यू आर फैंटास्टिक. एंड आई प्रे टू गॉड कि दैट योर दिस मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी. Thank you. Thank you. Please pray. Keep praying, keep praying. Yes. Thank you. सवाल हाँ, आपका सवाल था सवाल कि जवाब दे दिया आपने सवाल. अरे वो भूल गई, देखो शर्मा रही है. आई थिंक तुषार सर को देख के वीजा बोर्ड बुलाना पड़ेगा आपके सवाल के. नहीं, एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटमेंट हो गई आपको देख के. तो मेरा सवाल ये था कि आपने जब ये मूवी की थी तो कोई भी ऐसा सीन ऐसा था जिसमें आपको थोड़ा स्कैरी फील हुआ? फिल्म की कहानी सुनते वक्त तो बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ बहुत स्केरी फील हुआ, लेकिन यू मीन शूट करते वक्त? यस. शूट करते वक्त हमारे इतने नाइट शूट्स थे कि सब दिन, मतलब पूरा शेड्यूल ही बहुत ही स्केरी था मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक नाइट शूट्स. लेकिन इतना मज़ा आया, इतने अच्छे सीन्स थे, इतने अच्छे लोग थे, एंड वी वर सो वेल लुक्ड आफ्टर बाय जयेश भाई टीम, वेरी वेरी कंफर्टेबल. सो पता ही नहीं चला कि वो शेड्यूल कहाँ चला गया. वो तो ट्रेलर देखकर यहाँ पर मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगता है. जब भी मैं डबिंग कर रहा था तो मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगने लगा. क्यों, मैं ये नहीं बोलूँगा वाई, क्यों, आपको फिल्म देखनी वो पड़ेगी. फिल्म देखने के बाद हमको पता चलेगा. बट ट्रेलर वाज फैंटास्टिक एंड आई एम श्योर दिस मूवी इज ब्लॉकबस्टर. गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. Thank you. यस Hi Tushar. Yeah, I had the privilege of knowing Sangeet Sivan sir when you were doing Kya Cool Hai Hum also, and as you said, 20 saal baad. He was a creative genius, and I have seen him. He's a very down to earth person, but he was full of creative energy. So can you share some anecdotes, some memories of working with Sangeet sir? आई एम फ्लडेड विद मेमोरीज. और आज ही मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि May 6th 2005 को क्या कूल लगी थी फर्स्ट पार्ट, एंड इट्स एग्जैक्टली 20 years later now. It's I think it's all in God's hand. The timing of things is all in God's hand, and I feel very very मतलब कि I feel lucky that I got a chance to work with him. Again, that is my saubhagya, and again that's in God's hands. It's not in our hands. We can only do our best, and the right projects come to you at the right time, and this is definitely a right project for me. So a lot of anecdotes. I mean, we've done the first trailer screening of Kya Cool also in this property, and it was called something else earlier. It was called Fun Republic earlier. Now it's Cinepolis, but we've done it here. And बाजू में हमारा ऑफिस है बालाजी का, तो वहाँ कितना बैठा करते थे हम, और कितनी यादें हैं. एंड मार्केटिंग, आई थिंक दैट सेट ट्रेंड्स where marketing is concerned also. That movie, I think we tie-ups हुए थे, पहली बार हम serials में गए थे. And so lots and lots of memories with the entire team, and I just feel very very emotional right now, and it's again in God's hands today that we are able to see such a wonderful movie coming out so soon on the 23rd of May. A very good month. It's a very good period also, and very lucky for me. I've had, मुझे कुछ कहना है, 25th of May, shoot out at Lokhandwala 25th of May, and Kya Cool Hai Hum 6th of May. So May is a lucky month for me. So that's it. May is lucky for me too. Hello, my question is for Siddhi. I want to ask. Sorry. I want to ask that what's that one behind the scene moment that you enjoyed the most? I think most of us were shooting for about say 40-45 days, and we were shooting in this place called Faridabad. So first of all, outdoor shoots जो होती है वो सबसे ज़्यादा fun time होता है, because as a team आप एक साथ मिलते हो, एक साथ खाते हो, पीते हो, काम करते हो, so you end up becoming really good friends with everybody. So I feel instead of just saying one particular moment, I'd say that the whole shoot was the best experience. जब भी हमें थोड़ा टाइम मिलता था हम दिल्ली निकल जाते थे, दिल्ली में जाके शॉपिंग करके वापस आ जाते थे.
Then शादी में गए थे. Yeah, we crashed a wedding. हमने I don't know ये मतलब बोलना चाहिए कि You can just get arrested later. नहीं नहीं नहीं, तो नहीं बोल रही हूँ. But basically बहुत मजा किया है. Night shoots में I think तुषार sir doesn't like it, but I love night shoots because it's so much fun and ठंडी थी वहाँ पे. So we used to all sit and वहाँ पे वो bonfire type होता था, सब आजू बाजू बैठ के we used to sing songs. I think there was a cricket match going on that time, World Cup World Cup was going on. World Cup was going on. So in between the takes हम सब बैठते थे कि सबके मतलब 5 लोगों के फोन लगे हुए हैं and सब देख रहे हैं अरे क्या हुआ कोहली आउट हुआ रोहित शर्मा आउट हुआ. So I think all in all I think it was the best experience so far. So yeah. Also enjoyed the trailer and can't wait for the movie. Thank you. Thank you. Yes, we have hands there. Congratulations to all of you. Thank you. Thank you. Thank you. My name is Bharat. I am from Update Now. I just wanted to ask Sonia. Sonia, as a female lead in a horror comedy, what did you bring to your character that brings you stand out? Honestly, I think Madhu's character is going to be very close to my heart because she was one of the first characters where I felt zero obligation to look good, to have my hair done right, to say the right dialogue. Sangeet sir gave me so much freedom and I couldn't be more thankful for it, you know. Zero obligation to say the right dialogue. No, I mean to look good in any way. Like मैं छोले भटूरे खा रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, and I would go on set and he would allow me to improvise a lot and bring out my own voice. So like जैसे कप कपी की चीख होती है, that's my voice that you don't think is mine, but it's mine. But yeah, I think Madhu definitely gave me the ability to just let a lot of walls down in front of a camera, जो बहुत actors or actresses के होते हैं. Yeah. I'm grateful for that. Yeah, hi, this is Sohail over here from Instant Bollywood. A big congratulations. Jai, I just wanted to know कि last year ही संगीत जी हमारे बीच नहीं रहे थे, तो ये फिल्म तब तक कंप्लीट हो गई थी या फिर अगर और वो जो न्यूज़ आई थी आप सब लोगों के लिए, it was a very shocking for everyone. तो just needed to know फिल्म कंप्लीट तब तक हो गई थी या फिर क्या कुछ पोर्शन रह गया था, क्या था? एक्चुअल में ना डबिंग का लास्ट डे था, कुछ दिन से संगीत जी को फीवर रहता था, बट लास्ट डे ऑफ डबिंग वो घर गए, देन ही एडमिटेड. सो ऑलमोस्ट ऑल द क्रिएटिव कॉल्स वाज डन, लाइक एडिट हमारा लॉक था, डबिंग हो गया था. सो आफ्टर दैट जस्ट वट एवर विथ डन बाय द एसोसिएट एंड संगीत जी सन, जो उनका कॉल था उसको जस्ट कंप्लीट किया. तो फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट थी हमारी, जस्ट उसका प्रोसेस बाकी था. All the best. Intentional horror comedy like we've seen of late कि हाँ ये genre तो horror comedy. इस फिल्म को आप देखेंगे तो आप तो देखेंगे कि situationally comedy हो जाती है, लेकिन by and large the story is about the Ouija board which is quite scary. So that's why horror comedy. Fantastic. नमस्कार एवरीवन और बहुत बहुत बधाई हो आपको कब कभी के लिए. मैं इस मूवी का पार्ट हूँ, बट मुझे आप सबसे जानना है एज ए एक्टर एंड जय सर से भी कि संगीत सर के साथ आपने काम किया ऑलमोस्ट 1.5 महीने 2 महीने जो भी था, तो आपका ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? एक मेमोरीज होती है ना आपकी कि हर डायरेक्टर के साथ, तो उनसे ऐसा नया क्या सीखा? लाइक उन्होंने ऑब्वियसली आपको अपना पार्ट प्ले करने का पूरा मौका दिया कि आप अपनी चीज़ बाहर लेकर आओ, एंड तो आपने उनसे क्या सीखा? तो आप सब अपनी तरफ से कोई एक पॉइंट प्लीज़. थैंक यू. I guess I'll start and we go down the line. I think for me, I was thinking about this very recently, and Sangeet sir reminded me of a little mouse on set. I would always look back at the monitor. I have this habit after I do any take, I look straight at the director. And every time I looked at him, I would just see him like sitting behind the monitor with his little giggle. He was one of the sweetest people I knew. Never raised his voice, at least not in front of me. And he would call everybody mole. I don't know if I'm pronouncing that correctly. Mole. I did it correctly. But it was very endearing, and I think he was a huge part of why this cast feels like such a family. Like even today when we came, there was so much heart here. We all felt so happy seeing each other. So I know it's heartbreaking that he's not a part of this,
right now, but this film has so much of him in it. I think I'll add one or two more things to what Sonia said. I think for all of us, the stage begins from there. Sangeet sir is with us. And just like this, he has been there like a constant thread throughout the movie. He was the hardest worker in the room. Never have I ever seen him sitting on set. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये. Throughout the shoot, he wasn't feeling well. The AQI was around 800 to 1000 on most days, right? Diwali time and everything. He was not feeling well, hardest worker in the room, always standing, always rehearsing with us. मुझे एक बात याद है उनकी कि scene होने से पहले हमेशा with the script he would rehearse with all of us, and that's where all the camaraderie and that's all where the comic timing has come in. So I think those rehearsals and that leeway जो उन्होंने हमको as actors दिया उस समय करने का या improvise करने का, that I think I'll always remember him for that. Well, I've already said so much about him already, and he's like part of the family because my first comedy film was with him. क्या cool है हम, उसके पहले comedy किया नहीं था, तो जो भी comedy का सीखा है सबसे पहले उन्हीं से सीखा है, and he gave me a role of a lifetime then, and he's given me a role of a lifetime now. So just keeping my fingers crossed and keeping him in our hearts and in our minds, and he's with us today. So we're just doing our best, not just for ourselves, but उनके लिए भी. Thank you. Since you asked like a memory, तो I would say there used to be times जहाँ पर बैक टू बैक जब सीन्स होते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप सीन के बीच में आप जा सकते हो रूम में, क्योंकि यू हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट शॉट. कभी कभी वही एक्सेस में दूसरा भी सीन शूट हो जाता है ना. सो देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मैं वही मॉनिटर के पीछे, आई होप शांतनु सर माइट बी नोइंग दिस, मैं मॉनिटर के पीछे सो जाता था. गद्दा तो हमारा वही लगा पड़ा था, तो आई यूज्ड टू स्लीप. सो आई स्टिल रिमेंबर मैं सो गया था एंड फटाफट आधे घंटे में वापस बुला लिया गया था, शूट हुआ. फिर मैं हमको टाइम मिला, ब्रेक हुआ, फिर आई वेंट टू द रूम एंड आई ओपन माई फोन एंड I saw Sangeet sir sent me a lot of photos of me sleeping in different positions, and you know he wrote a very sweet message, come back Nanku, कि shot ready है, come back Nanku. So that was one of the sweetest memories कि मतलब even while he was working on the other shots, he had this thing कि इसका थोड़ा you know funky position में सो रहा है तो फोटो निकालता इसी को भेजता हूँ. That you know that cute innocence, वो fun कि हर family की जैसा atmosphere create कर दिया था सर ने. And also I would like to say one more thing, we are all talking about Sangeet sir, but like we say कि एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. I think I really want you all guys to give a huge round of applause to Sangeet sir's wife, because I'll tell you why. Not only right now but even during the shoot of the film, morning अगर 5 AM का भी call time होगा और रात को 10 PM 11 PM का भी पैकअप टाइम होगा, she was always there with him, right beside. एक chair रहता था, that's for her only. And I think so we should all give her the equal credit, and not only her, his sister Sajna ma'am, and even I am getting emotional. And so yeah, I mean, I think that it is not only teamwork, but it is also the whole family work. Shantanu sir and everyone who was so supportive of him. And I think ये उनकी इमोशन है जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है. आप एक एक सीन देखोगे आपको पता चलेगा. एंड आई फील संगीत सर यहाँ पर भी है एंड फिल्म के अंदर तो नजर आएंगे ही, क्योंकि उनके जो क्वर्क्स है, जो यू नो वन लाइनर्स है उनके बहुत, वो मुझे आके बोलते थे कि नंकू इसको ना ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. एंड देन आई यूज्ड टू थिंक हाँ यार ये मतलब ही हैज़ दिस यू नो कमांड ओवर कॉमेडी विच आई थिंक जो बहुत बहुत कम होता है इन स्पॉन्टेनिटी. तो आई थिंक सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर संगीत सर, स्पॉन्टेनियस कॉमिक टाइमिंग. सो या I think, yeah, we all really miss him, and I am hoping that he's there with us, and that the film becomes a massive success, not for any of us, but for him. So thank you. So I saw him before the day he passed away, and किसी आदमी को आप शायद मीटिंग ब्रीफ इंटरेक्शन में शॉट के पहले बहुत कम जान पाते हो कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है. आई थिंक उनके जाने के बाद से आई थिंक आई हैव बीन टच विद द राइटर्स एंड जयेश सर, एंड आई एम डिस्कवरिंग सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट ही हैज़ बीन. I mean, see the kind of work he has done in vernacular and regional cinema.
Yodha, please go and watch Yodha. One of the finest actor, Mohanlal, arrived in the scene because of that. And it was like a film school, literally. No matter, I am from certain drama school and I pose a superiority over I'm certain kind of actor. But to work with him, you got to know the skill and trade of cinema making. That's a genius that has passed away. And I think the seed of creativity he has sown in his family, I think you will see. More power to you guys. Hello guys, so this is my first ever Hindi film and Sangeet sir is the sole reason why I'm on the stage, because initially this character was a South Indian character who was Malayali, but then my Malayalam is also bad, Hindi is also bad. So because of me, he believed some talent that I have, he made this character a Tamilian who speaks the worst Hindi that you will hear. It's because of him, Saurav, Shantanu, Sid, that I managed to tell my lines. Till the end of the schedule, till the last day I met him, he used to call me by my character's name. Then I wanted to tell him, Abhishek sir, Ravin, that's all. So he was the first to arrive on set, last to leave the set, no matter how bad the pollution was, climate was, weather was, no reasons. He was always there. He was, he might have been serious with the direction team, I don't know, but never once to all of us, he showed the side of anger. He made us all look old. His energy was very, contagious on set. So I really hope, Sangeet sir, wherever you are, we make you proud. I hope you like the final output. Join us on 23rd, we'll watch it together. Yeah. Yeah, I mean, pretty much the same feelings I share, and really, it feels like he's around us. It doesn't feel like he's not around us. And the kind of person he was extremely warm, very nonchalant in his behavior. Never would he come across as a person who's not accessible. Anybody could walk up to him, talk to him, and he had a very strange kind of humor, and his wry humor, and his one-liners were amazing. He would, say something in passing and then won't repeat it, and then say something somewhere else. So, and he would just turn a serious situation into a very comical, funny situation. And the best thing was about him, and I think because he as a person was so real, in lack of a better word, that then it was bound to happen that the actors and everybody on set was just like family. Luckily, we were shooting in a house most of the time. And we had the people whose house it was, they were also around. They also became part of the set. Haryanvi people with a South Indian director. And Tau, theek haan, mole, Tau. So it was all great fun, and what a guy. I mean, quite honestly, rarely you find people who are full of matter, but they don't show it at all. And he was one of those rare people who was extremely simple. और हिंदी में उनका घड़ा भरा हुआ था, he wasn't an empty vessel who makes noise. He was a very special person, and a very sad that he's not around us, and an untimely demise. But his work is here with us and will all forever and ever be. So wonderful memories with sir. Thank you. He was, as a human, gem, as a creative person, to be honest, creative genius, and he only talk is film. No any other talk. So that was he, and as a human, I really missed, because during, it was privilege to work with him like one and a half year during the making of this film. So we're really missing him, and we planned already to make more movies together, but unfortunately he's not there. You were right. Sir, can I join you for a second? Yeah, sure. Thank you. Okay. Can I get a paper? Thank you. ये क्या हो गया अभी? So I'll just give a small introduction कि ऐसा न लगे कि out of the blue कौन आ गया. So my name is Pratham Soni. I am a magician and a mentalist. तो mentalist वो होता है जो mind के साथ magic करता है. But I don't know, मैं यहाँ पे जब से आया, I was feeling someone, thinking of someone strongly. And जब मैंने आखिरी बार आपकी wording सुनी, मुझे लगा that you were thinking of someone, तुषार sir.
So you are thinking of someone, right? Yes. Yeah. Okay. So just think of him. Oh, it's a him. Yeah, it's him or her. Can I tell you? No, just think of it. It's a him or her. Okay, it's a him. I'm supposed to tell you or no? No, just think of it. Just yeah. Just keep thinking. Okay. Okay, it's a him, I guess. He's a boy. Just you are thinking of a boy or man. Okay. Think of the first letter. आप उनका नाम सोचिए. ठीक है. Okay. Think of the first letter of his name. I guess. Can you say the first letter of that name? Should I say it? The first letter, the first alphabet. say it loudly? Yeah. Okay, I'm saying it loudly. S. Wait a second. पूरा नाम सोचिए उनका. Okay. Fantastic. Oh, he's a friend of yours. He's not a random person. He's a person that you have spent a lot of time with, right? Recently. You might. Okay. Okay, I guess. What's the second letter? Second alphabet? What's the second letter? Yeah. H. H. Okay. अभी आप एक काम कीजिए. आप पूरा SH. अभी आप एक काम कीजिए. आप पूरा का पूरा नाम सोचिए. And I'll try to guess it. And guys, if I did, I guess हम ये कह सकते हैं कि something was making you think about him again and again. Yeah, just naturally it came to my mind. Yeah. Naturally, right? Just wait a second. Yeah, thank you. Think of the full name again and again in your mind. Got it? Everyone got it? Yes. Yeah? Using for suspense music. Yeah. Lovely, huh? Sir, in the count of 3, you will say the name of the person you are thinking of, and their reaction will say that if I got it right or wrong. Okay? In the count of 3. 3, 2, 1. Shreyas. Shreyas, everyone. Thank you. I Thank you swear so I much. didn't tell him, huh? I have not told He him. swears. Yeah. So just I. उनको लग रहा होगा कि हम लोग ने कुछ पहले सेटिंग किया होगा. नहीं. अरे आप लोगों को पता नहीं हम लोग ने किया हुआ है genuinely. Nah, sir, please can you sign this? It would be beneficial for. हाँ अब ज़्यादा पैसे में बिक पाएगा. I'm just joking. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Thank you. I think we've had some wonderful questions, and thank you so much for all of your responses. Later, we're going to go to the audience, and we are very excited for this. It's happening on 23rd of May. May I request all of you to please stand? We have media that's going to now do the photo ops. May I request everyone else to also join us on stage? We have the rest of our dignitaries. We'd also like to take this opportunity to give a heartfelt thank you to Z Studios. Thank you so much. It's been a wonderful, wonderful association, and we're looking forward to bringing Kap Kapi on 23rd May at a cinema near you. May I please request Mehak Patel, Girish Johar ji, Associate Producer Swati Tiwari ji, our Writer and Chief Associate Director Saurabh Anand ji, our production, please.
सजाए घर के हो, कोई भी रखे अपने शर्त, काम